In this video, NMC 2021 regulation and Russian MBBS, how it is a perfect match for Indian students. इसके बारे में थोड़ा हम बातें करेंगे. NMC norms 2021, how it is making sense in making the abroad education perfectly match with the Indian students. According to Russian MBBS, Indian students को generally 54 months का theoretical part और 1 year का internship रहना चाहिए. Then only they complete all their 19 subjects, which is very important to come and do their FMG screening test. अगर अभी रशियन एजुकेशन में हम कौन सा यूनिवर्सिटी अभी सेलेक्ट कर सकते हैं? See, basically as a parent's point of view, I would generally tell you that before selecting the universities, थोड़ा सा होमवर्क हमें भी करना चाहिए. जैसे कि पहले स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि whether this university, whichever university you're going, it is a government university. And next we have to come to our main and most important part is the financial part. ठीक है, financial part में is that affordable for you? See, like India, Russian universities also have a different fee structure in different provinces में. तो whether this university which you are selecting and it is a low budget university and can you afford it? ऐसे सब देखकर हमें उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना चाहिए. Next, I'm coming to the part whether the Russian MBBS is very important and very it gives the proper credibility to Indian education. It's par with the Indian MBBS. Of course, yes. इसका आंसर of course yes ही होगा, क्योंकि like in India, even in Russian education, they have started with the cadaver system, and the most important part in their curriculum, they have started with robotics also. See, these are some nuances which the Indian students who is going to study MBBS abroad should be very particular about it. ठीक है, ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? रशियन यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकता है. Not only now, हम लोग बहुत सालों से रशियन डॉक्टर्स यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेल वर्स्ड ऑल्सो. सबको एक मिथ होता है रशिया में जाके पढ़ के आने से हम FMG क्लियर कर सकते हैं. इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट? इज दैट पॉसिबल? येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि रशियन का एक सिस्टम ऐसा भी है which from the day one, that is from the first year itself, they are giving training for FMG. How they are giving? See, FMG generally MCQ टेस्ट होता है. So, रशिया में कैसा होता है कि क्रेडिट सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पर स्टूडेंट हैज़ टू फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ दे आर वेरी मच यूज टू दैट MCQs एंड फाइनली व्हेन द वाइवा कम्स दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन ट्रेनिंग देम ऑल्सो. सो ऐसा सिस्टम वहाँ पर तब से बना था, इसीलिए आजकल के बच्चे, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, दे आर क्लियरिंग द FMG इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. So these are the some things which you have to see for Russian education and we have to go for it. According to NMC, the medium of instruction should be in English and the 54 months and 1 year of training should be from the same university. For more details, contact nearby Medsi Education. We will guide you throughout your process. Thank you.